Welcome to Second Home. Today we have a very special guest with us, Dr. Kumar Vishwas. Dr. Kumar Vishwas is one of India's leading performance poets. He has a unique approach to poetry presentation. He fuses music, words, satire, humor, love to create a wonderful mixture, concoction. And with this presentation, he has brought back young people in India who had moved away from literature, moved away from poetry, back to poetry and back to poetry presentation on stage. So when you see his shows, you have this huge auditorium filled with young people, and he's there, the hero on the stage. So we are going to have a very interesting conversation with him. Welcome to the show. Thank you, shukriya, aabhar. And wanted to ask you, poetry and politics, to absolutely different. This is a 180 fields, degree actually. you know? So in one you have to reveal and one have to hide. yeah, I recall you telling me that. So you're talking about the changes which has taken place in the political scenario, which has brought about a change in leadership, I suppose. Eventually, in the world history, politics associated itself with the bloodshed around in the history, with power. And whenever a power grabs any individuality, the gate of overflow of emotion used to be crushed down, used to be turned down, used to be drained down even. So people like me, who are, occasional encroachments in the battleland of politics. As I said, as Shakespeare has once said, ki happiness is but an occasional episode between the general drama of pain. So politics is a general drama of pain, ditch, and all that bloodsheds, lies, forgeries. We'll just take a short kind of a trip back to your, through your life. I wanted to ask you, I read about this, that you were studying engineering, if I'm not mistaken, and then you left all of it and you entered the world of words, which was something which was beckoning you. So was it very difficult for you to leave a conservative, traditional, safe world of profession where you were almost you knew that you would be sure to get a job, and then you get into this ephemeral, uncertain world of words? And how did your parents react to it? I'm a teacher's kid and the youngest one in my family. We are 5 brothers and sisters. So in the late 80s and the early 90s, being an engineer and get an admission in engineering college or a medical college, that was the safest middle class path of the life. And my father was very much conscious that I should choose that, and he was sure enough that I am a brilliant kid. I still do not know, but he thought that I'm a brilliant kid. But I was a man of music, man of words, man of melody and liveliness, and he was a professor of literature. So he forced me for this engineering thing, and after a rift between me and him, emotional at the time, I opted for graduation in literature. I see. And what the wonderful thing he did to me, he's my father, and I must thank to him, not for bringing me to life to the world, but also to that tough decision he took at the time. He said ki, if you are taking your own decision of your life, you have to earn your own money to get it away with your thoughts and your determinations. Okay. At the age of 17, there was a challenge before me to earn money for my studies. It's very hard, must have been very hard, right? At that time it was very hard because उस समय creativity के इतने ऐसा नहीं तरह से आज है कि हमारा बच्चा गाना गाना चाहता तो okay, we will send him to a music academy. हमारी बेटी खेलना चाहती तो we will send it, because we have Saina Nehwal, we have Saina Mirza, we have Deepa Karmakar, and we have success stories around with the girls doing wonderful things and boys doing wonderful things. At that time it was not in that way. So, but that challenge was good. So I start ghostwriting in magazines because no one was interested to put my name in those magazines. So I did ghostwriting for a kids magazine that was from Delhi. It's one of the best magazines of the country. Then I start writing for All India Radio and doing shows for that Mehfil, Manbhavan and Yubani. And suddenly I was forced on a stage of Kavi Sammelan by one of my friend's relative, because थोड़ा देर हो रही थी कवि सम्मेलन में और कोई चाहिए था जो शुरू में थोड़ा बोल दे टाइप होता है ना, तो my friend referred me कि ये भी कविता लिखता है and his uncle said कि अरे इसको खड़ा कर दो because all were the biggest name of that time. Bal Kavi Bairagi and Gopal Das Neeraj, all those Kavi Sammelan stalwarts were there. So I recited my poetry and
मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक थी जैसी भी थी, बिकॉज इट्स फ्रॉम माई मदर साइड. शी इज अ वेरी गुड सिंगर, शी इज अ वेरी pious lady. You sing your poetry, right? Yeah, I sing. I'm the first person in India who sing and perform in music. So मैंने उसको गाया and वो बच्चों जैसी कविता थी, लड़कों जैसी 17-18 साल के लड़कों की होती है, और मैं भी ऐसा ही छोटा सा था. So बड़ी sympathy मिली and there was a huge round of applause and claps and at that time. So several organizers of Kavi Sammelan were sitting in the crowd. They approached after the show and they said हमारे यहाँ आ जाना भाई, हमारे यहाँ आ जाना, 5 दिन बाद यहाँ आ जाना, 6 दिन बाद जाना. And that was a very easy money. And in 2010 I got an appointment in 2000 in Delhi. Okay. Near Delhi Ghaziabad in Lajpat Rai College and joined there. So जब मैं वापस दिल्ली आया, so मैंने कवि सम्मेलन के सीन को पास से देखा. And the first challenge I thought for the Kavi Sammelan at that time was that it is dominated by grey-haired people on the stage and in the audience. We have an average audience of 45-50 plus, and we have a battery of poets, a bracket of poets who are 50 plus, 60 approaching, 70 approaching. We haven't any young poet. 3-4 हम नए लड़के लड़कियां थे, और सुनने वाला तो नया है ही नहीं. सो मैंने सोचा कि ये तो ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिन बाद, बिकॉज जैसे नौटंकी ख़त्म हुई, सांग ख़त्म हुए, बहुत सारी फोक आर्ट्स हमारी ख़त्म हो गई. सो 2002 तक आते आते मेरी समझ में आया कि आई हैव टू फैच young crowd, youth to this industry, to this platform, to this podium. And I approach IITs, because in India there are 2 type of engineers, one who are from IIT and one who wish to come from IIT. If you watch my programs on YouTube, they are not complete poetry. They are a package of poetry in between. Because I do want to involve a Nayyar of South, a Basu and Mukherjee from Bengal, a Mehta or a someone from Assam. So I did show in Alchiranga, Guwahati. I did show in Springfest, Kharagpur. I did shows in Trichy NIT. I did show it in Durgapur NIT, and everywhere there are audience, because it's a mix of audience. That's right. And the typical Hindi, आदरणीय मित्रों 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सबकी संवेदनाएं आमंत्रित करता हूँ. They will not go, and they will not listen, and I have to enhance the family of my mother Hindi. मुझे अपनी माँ का कुनबा बढ़ाना है. I have to invite more brothers, more sisters, more relatives, and to make it festive. Change कर दिया. So I changed the presentation. The stiff mic that was on a stand, like I hold it out like a musician. I hold it out with that cord. And after that without cord, and that is skin mic, and then this lapel mic. Okay. And I start conversing with the phrases, jumle, थोड़ी सी बातचीत अंग्रेजी. Okay. And I reformed the dress code even. Okay. There was a typical kurta pajama bandi. So with strawls and jackets and designer suits every season. Okay. So उससे थोड़ा सा glue बढ़ा, eye glue बढ़ा, कि कुछ अलग कर रहा है. And the best part in this strategy I opted was the use of new technique. Yes, this was not done. I'm 100% sure. No, it this was not done, and it was before. It faced so much of retaliation and so much of friction from the poetry clan. They said this man is destroying such a pious stage. And but I was saying कि सर जी आप इसे एक छोटे से हॉल में 20 लोगों में 50 लोगों में कर रहा हूँ. You are doing it to 250 people. So बड़ा इसका विरोध हुआ. And I was boycotted from Kavi Sammelan. You were boycotted? Yeah, boycotted. 24 poets right down. They were all esteemed poets. Now they are very good friends and all accepted it. All of them accepted now. They said कि अगर वो आएगा तो हम नहीं आएंगे. But for an art form to survive, it has to evolve, right? But evolve नहीं करेगा तो survive. But they were not at that mind frame. They were not. They were not. But have they changed their minds now? No, now they are using all those things. Oh, so they are in Facebook. They are doing videos. Okay. They are trying to add some music, and it's very good because I'm not the last man on earth. People came after me. They are coming. I'm watching those young kids, young boys and girls who approached me. जो मुझे फेसबुक पे लिखते हैं, जो मुझे मेल करते हैं, सर मैं कविता लिखती हूँ, वीडियो भेजती हैं, लड़के भेजते हैं, एंड दे आर वंडरफुल पीपल. वो मुझसे भी बेहतर आएंगे. उनके पास इमोशन मुझसे भी बेहतर है. उनके पास इमोशन की जो बाजीगरी. मेरे वक्त में मेरा इश्क हुआ, पहला इश्क हुआ, तो उससे बात कहने सुनने में मेरे को बहुत वक्त लग गया. उसको मुझसे कहने में वक्त लग गया. पर अभी यहाँ तो बहुत तेज है, यहाँ तो बहुत तेज से इन्वॉल्व हो रहे हैं. फिर आपके इमोशंस भी अलग है. पहले खत की आहट थी, खत के थे. अब आप घर वालों से बचाते हुए वो मैसेज देखने की आहट है. उस मैसेज की लैंग्वेज, उसकी स्माइली है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अब उनके पास नया थॉट प्रोसेस है, तो नई पोइट्री है.
हर नया वक्त अपनी नई धुन, अपनी नई कहन और अपना नया चेहरा लेकर आता है। आज जब मैं आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मुझसे इंटरव्यू ले रही हैं, इन्हीं स्टेजेस पर आज से 30-40 साल पहले शिव बटाल भी बैठा हुआ था और BBC लंदन उसका इंटरव्यू ले रहे थे कि पूछ दो हाल फकीरों का। सच ए हैंडसम पोएट ऑफ एज ऑफ 32, ही लुक्स लाइक धर्मेंद्र जी, मोर हैंडसम देन धर्मेंद्र जी, and he was the heartthrob of Punjabi people and Indian people and is still my beloved कवि, मेरा बहुत प्यारा शायर, महबूब शायर है मेरा शिव। कल 20 साल बाद, 30 साल बाद आपकी जगह कोई और बैठी होगी, और मेरी जगह कोई और बैठा होगा, तो मुझे ये नहीं मानना चाहिए कि मैं आखिरी आदमी हूँ। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और लैंग्वेज कभी भी शामियानों से बड़ी नहीं होती, वो अपने बेटे बेटियों से बड़ी होती है। इफ यू हैव शरद चंद्र विद यू, इफ यू हैव रविंद्र विद यू, इफ यू हैव बंकिम चंद्र विद यू, देन बांग्ला बड़ी माँ है, तो हमारी बड़ी मौसी है। इफ यू हैव सुब्रमण्यम भारती विद यू, तो हमारी वो दक्षिणी भाषा हमारी बड़ी माँ है। तो हिंदी अगर बड़े बेटे पैदा करेगी, सो मेनी ऑफ कुमार विश्वास, सो मेनी ऑफ पोइटेस, जिनको अफ्रीकी देशों में ट्रांसलेट करके सुना जा रहा हो, तो फिर हिंदी को बढ़ने से कौन रोकेगा, हिंदुस्तान को बढ़ने से कौन रोकेगा? That's right. So you are happy that you have left your mark. You have left your mark and you have made your bit of contribution to the Hindi literature tradition that was slowly I suppose जो young people के बीच जो slowly it was dying down, it is reviving and you have contributed to that. If a creative artist is satisfied with his or her work, it's not good for his creativity. That's also true, yes. So I'm not satisfied, but I know I will not be right off by the history. मुझे ये पता है कि मेरी पोइट्री पे जब बात होगी तो अच्छी थी बुरी थी ये तो मुझे पता नहीं, वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, मैंने पोइट्री तक लोगों को लाने के लिए कोशिश की थी, और एक बहुत बड़ी जमात को लाने के लिए विरोध भी सहा, परेशानी भी सही, लेकिन लोग आए, आज वो आ रहे हैं, ये बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है the best is yet to come. Okay, that's wonderful. That's best great. is yet to come. मुझे लगता है कि मैंने अभी नहीं किया है। मुझे किसी भी गीत लिखने के बाद, गज़ल कहने के बाद 2-3 दिन तक उसका हैंगओवर रहता है, खुमार रहता है, और मुझे लगता है मेरा बड़ा खूबसूरत कहा है। क्या इससे बेहतर तो मैंने पहले नहीं कहा था, लेकिन जैसे जैसे वो वक्त बीतता चलता है, मुझको लगता रहता है कि यहाँ बात चुक गई, मैं पूरी कह नहीं पाया इस वाले गीत में, बात हो नहीं पाई। सो वो नहीं हो पाई कि जो धुन है, वो फिर अगला गीत, अगली गज़ल कभी महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, कभी किसी ट्रैंक्विल मूड में फिर कहलाती है। तो अभी मुझे लगता है कि लॉट्स टू डू, और स्पेशली जो पुरानी क्लासिकल हिंदी पोइट्री है उसको सरवाइव कराने में, अगर आपने वो सीरीज़ मेरी देखी हो तर्पण, जो मैंने नेट पे लॉन्च की है, जिसमें हमारे जो बड़े स्टालवर्ड्स हैं हिंदी पोइट्री के, जो आपने भी पढ़े होंगे कोर्सेज में। आई एम क्रिएटिंग दिस म्यूज़िक इन माई पर्सनल स्टूडियो, दैट इज़ KB स्टूडियो, and it's a 100% non-profit thing. I'm investing my own money, hard-earned money, my thing, सिर्फ इसलिए कि ये डिजिटल फुटप्रिंट है जो सदियों रहेंगे, जो मेरे बाद भी रहेंगे। एक हाँ, we are nearing the end of the show. I wanted to request you to say a couple of lines. एक दो लाइंस अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम कई बार वक्त जब ऐसा लगता है कि कुछ वक्त खूंखार है, ख़राब है, तो हम डर जाते हैं, अंधेरा बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में भी ऐसी चुनौतियां आती हैं, इन दिनों हैं, going through a tough time, yes. टफ टाइम, मैं ऐसा मानता हूँ, और पूरी दुनिया में इन दिनों ऐसा टफ टाइम है जहाँ आप अपनी बात कहने से डर रहे हैं, जहाँ फैनेटिक ताकतें आपको दबा रही हैं, अंधी राष्ट्रवाद के नाम पर, अंधी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक पागलपन जुनून तारी है। सो एक मेरी कविता है, मैं वो सुनाता हूँ कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे कि कफन हो जाए, घर के एहसास जब बाजार की शर्तों में ढलें, अजनबी लोग जब हमराह बन के साथ चलें, अजनबी लोग जब हमराह बन के साथ चलें, जमी से आसमां तक सारा शोर थम जाए, जमी से आसमां तक सारा शोर थम जाए, सितम की मारी हुई वक्त की इन आँखों में नमी हो लाख, मगर फिर भी मुस्कुराएंगे, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे। क्या बात है। In dark times we will sing, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे। वो लड़ाई को भले आर पार ले जाएं, लोहा ले जाएं, वो लोहे की धार ले जाएं, जिसकी चौखट से तराजू तक वो उन पर गिरवी, उस अदालत में हमें बार बार ले जाएं। हम अगर मुस्कुरा भी देंगे तो वो सब के सब हमको कागज़ पे हरा के भी हार जाएंगे, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे। क्या बात है। अंधेरे वक्त में भी गीत। Wonderful, wonderful. Thank you so much. Thank you for being with us today. Thank you. Namaste.